बजा दीजिए। Operation Sindoor was a brave and powerful mission carried out by India. It was launched to give justice to the lives lost in the Pahalgam attack and to protect our country from terrorism. In this place, we will show the pain of the family, the courage of our soldiers, and the strength of our nation. This story is about sacrifice, bravery, and honor. It was to motivate, respect, and pride. Jai Hind. नमस्कार, मेरा नाम विवान अग्रवाल है। मैं 4 साल का हूँ। मैं केजी कक्षा में पढ़ता हूँ। धरती के स्वर्ग कश्मीर के पहलगाम में एक आम आदमी आतंकवादी हमला हुआ। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और मानवता को शर्मसार किया। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का एक मिशन था। ये है पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में किया गया था। करना था। उस पर आधारित एक नृत्य नाटिका मेरे मित्र आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। धन्यवाद। अपने सियासी लोगों से बोल कि किसने तेरा ये हाल किया। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की वेस्टर्न वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों की इस कायराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए हैं। नाम की और यहाँ कोई चीज नहीं होती और अब खो लेंदे जेड़ा होवे ओनू जान तो प्यारा वे तू मैनू छड्ड जाना गल्लां तेरियां तो लगदा जाते जाते तुमने आवाज तो भी होगी हर वक्त यदि है हम उस वक्त कहाँ थे हम कहाँ तुम चले गए घर में घुसेगा भी तो मारेगा।
9 terror plans across the line of control on 7th day of Operation Sindoor. भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक पहलगाम हमले का कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, शोभित सीमा पार हुई। तन घन 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 लहरों में भी वो सेना की, दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े कहानी में। वो सेना की गर्जन से चल सका न दुश्मन चाल कोई, रचा चक्र सागर में जिससे शत्रुओं की हार हुई। जन गण 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 गण, तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की। What a nostalgic performance. Give them a huge round of applause. सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। डीजे वाले बाबू कर्टन गिरा दो। We warmly welcome the pillar of execution and stability. At Icon Nurturing Innocence, our respective director, Mr. Mukul Tyagi, a civil engineer by profession, Mukul sir understands the importance of foundation, not only in structures but in system, discipline and growth. His journey reflects dedication, resilience and unwavering commitment to quality. For Mukul sir, school is not just building. They are the safe space where children grow with confidence, care and joy. His leadership ensures that Icon continues to move forward with strength, responsibility and purpose. Sir, your dedication gives strength to our vision and stability to our journey. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mukul sir with a warm round of applause. Yes, this is our 18th annual function because initially in 2 years we did not do any annual function because of the strength we had, but now today is our 18th annual function and we are doing it continuously, and the entire credit goes to my team who work very hard, tirelessly, and they face me, a very tough man to deal with. बट उनकी जो मेहनत है वो बहुत है. It is very difficult for you people to imagine and to calculate how do they do and how much energy and patience and efforts they put. बट इतने छोटे बच्चों को दैट टू 10, 15, 20, 25 को एक रूम में अरेंज करके उनको एक रिदम में लाना. आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, रतिका मैम, प्रीति मैम, सुमी मैम, और मैं सभी का दिल से की गहराइयों से धन्यवाद कर रहा हूँ. दीदीज, सिक्योरिटी गार्ड्स, एवरीवन, एवरी टीम मेंबर who contribute even a single minute to make this event to this level what we are seeing today. ये सच में बहुत बहुत मेहनत का काम है because I am doing this from last 20 years, so I can understand better than anyone. मैं बहुत फास्ट रहूँगा क्योंकि टाइम कम है. तो first I would like to touch the reason I am here today, my parents, the person, the people who seed this plant, which is a big tree today with many branches. We completed 100+ branches this month, this year, and the inspiration, energy, guidance, lessons, learnings, teachings, blessings, everything
and the credit goes to my parents who are no more now. I would like to touch the achievements we have made in last 1 year. The first, which I just said, we completed 100 branches, 100 plus branches, and this is the actual number. This is not the factual number, but generally people quote in the market. This is the actual number. If I talk about the number we see in the market, this is 250 plus even today. Another thing to cherish, this year we completed 20 years in preschooling. Another thing to cherish, we started our NTT program, and I would like to touch this program because there is a very significant and a very legitimate reason why we started this program. We were struggling very badly with the teachers hiring because teachers were coming from different backgrounds and they were not able to teach the curriculum what we have made. Our curriculum is made by we people. This is not made by any educationist or any script writer. हमारे curriculum को वो teachers नहीं पढ़ा पा रहे थे and we were not able to save the children, but is imagined and what we are planning to do even today. इसके लिए हमने NTT का प्रोग्राम शुरू किया so that we are able to create our own teachers. And this program is launched very successfully. It is driven by my colleague Ms. Preeti Sinha, and she is driving it wholeheartedly. And this is going good also. Another thing and the last thing to cherish in this year, earlier we had a policy that we will not add any school in our ownership to support business partners because the team was short. Now team is big. We have many people, many hands, many sources, many inspirations, many hands. So we have revoked this policy and we have started adding schools, more schools in our ownership, and the school is being constructed in Ansal Sushant Lok Aquapolis, just opposite Crossing Republic in Vijayanagar area. मैं बहुत फास्ट चलूँगा. For us, preschool education is as important as the foundation of any multi-story building. जो importance multi-story building में foundation की होती है, and I am a civil engineer, so I can understand it very well, and I am doing this from the 30 years. तो जो role foundation का होता है, which is not visible, किसी भी बिल्डिंग की नींव फाउंडेशन कभी नहीं दिखती है और सारी बिल्डिंग का वजन उसके ऊपर ही होता है. Likewise, इन बच्चों को की जो नर्चरिंग हो रही है, Icon Nurturing Innocence and the team involved in this whole process is building the foundation of these children, which is a big job. Tomorrow these children will become like tall building in the industry. बच्चों को ये बच्चे गिरते हैं, उठते हैं और यही जीवन का क्रम है. ऐसे ही हमने भी किया है. The day we started Icon in 2005, not like we are growing and going continuously. We fall many times, but we every time we rise. आज जो बच्चे हम नर्चर कर रहे हैं, I am relating this statement with the mission of Indian government for the Atmanirbhar Bharat in 2047. आज जो बच्चे हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 साल के हैं, ये बच्चे जब 2047 होगा, ये बच्चे between 25 to 30 होंगे. I have given this special instruction to the team that these children should become the contributor of the country to become Atmanirbhar in 2047. इस मिशन पे मैं चाहता हूँ आप सब लोग पूरी टीम को दिल से गहराइयों से तालियों से उनका धन्यवाद करें. इनकी मेहनत की कल्पना अकल्पनीय है. इनकी जो मेहनत लगती है वो मेहनत अकल्पनीय है. और हम सब, आई एम सीइंग young parents in front of me, and you all can understand if you people are not able to deal with one child or two child at home, and they are able to deal with 20, 30, 40 kids at a time. इनका सम्मान और दिल की गहराइयों से सम्मान और ज़्यादा बनता है. There are certain things which is first and must. I would like you people to connect with me more focused, because I am seeing these things in the society at a great level. कि आज हम बच्चों को मना करते हैं, when we say no to the child, whether it is 2 years old or 20 years old, the reaction comes in an aggression. और ये बहुत गलत हो रहा है. आज बच्चों को नो सुनने की आदत नहीं है. इससे एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, बच्चों के बीच जो सिनर्जी होती है, सिनर्जी घट रही है, रिलेशंस घट रहे हैं.
Please practice to say no to the children. बच्चों की 10 में से 8 बातों को नो बोलो. हम सब जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, बट बच्चों के अंदर पेशेंस होना चाहिए. Say no to them. Practice to accept them to accept no. One thing, another thing I would like you people to tell to children the value of money. आज हम अपने बच्चों को वो कुछ भी मांगते हैं, हम सब हाजिर कर देते हैं. We are not teaching them the value of the money. पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता. आप बच्चों को संस्कार दे सकते हो, आप बच्चों को पैसा नहीं दे सकते. Whatever you earn for the children, and we all are earning for our children only, but if they don't create their own resources to earn money, that money will not suffice. बच्चों को पैसे की वैल्यू बतानी है. Third thing, हम सब लोग when we start our day in the morning, whether we go to our business place or we go to our workplace in our office where we work, our children do not know how do we do. कुछ लोग रिक्शा लेते हैं, कुछ लोग ई रिक्शा लेते हैं, कुछ लोग टैक्सी लेते हैं, कुछ लोग शेयर रिक्शा लेते हैं, कोई बस पकड़ता है, कोई मेट्रो पकड़ता है, कोई अपनी गाड़ी से जाता है. बट दिस इज a struggle. And going to office in metro cities is the toughest task of the day. इतना मुश्किल ऑफिस में डील करना नहीं होता जितना मुश्किल ऑफिस पहुंचना होता है. My request to all the parents, this will come as a homework in summer vacations to the children कि अपने अपने बच्चों को एक दिन अपने वर्क प्लेस पे लेके जाओ और एक्चुअली ऐसे ही लेके जाना जैसे आप जाते हैं. घर से भूखे निकलना है तो भूखे निकलना है. आपको लंच कब मिलेगा, आपका बॉस आपको डांटता है, गुस्सा करता है, समझाता है. Every child should see how their parents are living their life and for them. ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को सिखानी समझानी बहुत जरूरी है. मैं बहुत I have listened and watched many moments, many incidents in recent past. This is why I added this topic in my speech, and I have added such kind of a topic for the first time in my speech. I am coming to an end. This year, because we have completed 20 years, you are seeing on the screens also, we have come up with a very, very lucrative business plans, and we are expanding all across the country. Our presence in NCR is very good. We hardly have space in NCR except Delhi, and now we are expanding in every part of the country, not other part of the country. Every single location of the country we are expanding. My colleagues are sitting outside with this offer and this proposal. I would request you people to visit them, to listen to them, and if it makes any sense for you to continue with this, this will help you. Today, I have two business partners with me. One is Rakhi Gupta. She is running two branches in Noida, Noida 117 and Noida 122. And my another partner, Mr. Kuldeep Sharma and Deepti Sharma ma'am, they both are over here. दोनों का जो अचीवमेंट रहा है, कुलदीप जी भी और राखी भी, दोनों ने हमको कोविड से पहले ज्वाइन किया था. दोनों की ग्रोथ अमेजिंग है. राखी एडेड अनदर स्कूल. कुलदीप जी इज द ओनली स्कूल हु इज रनिंग द स्कूल विदाउट एनी ब्रांच हेड. और इन्होंने इतना ग्रेट वायोलेशन किया हुआ है कि हमारे स्कूल में मेल मेंबर की परमिशन नहीं है एंड पेरेंट्स डू नॉट वांट हिम टू लीव. कुलदीप जी का पेरेंट्स के साथ इस लेवल का रिलेशन है कि पेरेंट्स वांट्स टू सी कुलदीप जी देयर. लास्ट I am at the verge of concluding my speech and my statement. I want you people all to please respect all the team members, teachers, my didis, my teammates, my colleagues, my franchisee partners, my business associates for their hard work. Thank you, and thank you. Kuldeep. 100 feathers in Icon Nurturing Innocence. I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness had its been waiting, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations. My name is Tavi. I study in 8th class. Today we are performing the Kumrodan.
सुप्रभात, मेरा नाम अंकिता है। मैं प्री नर्सरी पढ़ती हूँ। आपके सामने हम लोग इसमें गान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है कि हमारा इधर आपको परवश करने का आपका चाहिए पर धन्यवाद। Thank you, my little anchors. Besok কিছু বলবো हाँ
everyone. We dance, we play at the big fun party every day. We cut tap tap tap. Music makes us clap clap clap. Samba makes us clap clap clap. We dance, we jive, we dance, we cheer. Hope you love our show right here. Thank you all. Hip hip hooray. Good morning, everyone. देश का टीका देते हैं। कार्निवल में बड़े मजे से किए जाते हैं। बड़े मजे से किए जाते हैं। नन्ही मुन्नी भी आपको सांबर दिखाने आ रही है। कीजिए, स्वागत कीजिए। Thank you. Thank you, my little members. This vibrant act is presented by Vasundhara branch. Levanta a mão tua, eu vou te pegar. Mãozinha na cintura, quero ver você dançar. Todo mundo cantando, coração acelerando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Todo mundo conquistar, todo mundo do Brasil. É entra no movimento, galera, vamos virar. Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai bolando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando eu vou conquistar, conquistando o Brasil.
my little anchors. This vibrant act is presented by Noida 117 branch.
जो बोले सुनिया